All right. So, Assalamu alaikum everyone. And today we are going to start. Tomorrow is your paper, and today we have decided to go over the syllabus once again in detail. And this detail involves 100 ultimate MCQs from across the different yearly paper, the best MCQs in my opinion. So those of you who will solve this worksheet by themselves, I have no doubt that you have a complete understanding, that you know the knowledge with complete clarity. And those of you who will solve these 100 MCQ by themselves, inshallah 40, you are going to score the full mark. So let me share my screen and let's get started for this final, not for the final, but second final time. Inshallah, we have class as I mentioned. We would see a lot of questions from moles, from electrolysis, because it's an extensive worksheet. So I want everyone to have this device with you. It's you people who are going to solve this with me. I am just here to assist you people with the understanding with all the questions. Correct? Yes. It's not muted. My screen. It's visible now. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. Which statement is not correct? So let's read all the statement and let's see which statement is not correct. So when it is not correct, I would say always start doing from option number D, because pehle wali to kabhi bhi correct option hi hota. There is a large decrease in the volume of a solid metal when the pressure is applied. So when you exert pressure on solid, do you think it is even compressible? Forget about large decrease. Thoda sa bhi decrease hota hai? I don't think so, because particles in solids are already closely packed. Then there is no point of decrease in the volume. So there is no decrease in volume. This statement is not correct. The carbon atom in gaseous methane are further apart than those of solid diamond. The carbon atom in gaseous methane are further apart than those in solid diamond. What is this? Solid diamond mein to they are closely packed. So this statement is incorrect. Gaseous में further apart होते हैं. और especially जो मीथेन होता है, मीथेन में तो it's not carbon atom, it's the methane molecule, it's not atom. ये तो molecular form में exist करता है ना. So ये तो statement incorrect है. The carbon atom in gaseous methane. Methane doesn't have carbon atom. It has methane molecule. It is simple molecular. So this is incorrect. Particles move faster in gaseous state than in liquid state. Particle move faster in gas. ये statement ठीक है. उसने तो not correct पूछा हुआ है. हाँ, ये statement ठीक है, but we are looking for not correct. ये बहुत confusing होता है. Energy, so this is a correct statement, but not a correct statement. Energy is released when liquid changes into solid. Energy is released. तो इसका मतलब ये है कि this all three statements, ये statement carbon atom and gaseous methane further apart, ये statement ठीक है, तो not correct. तो इसका मतलब ये कि D must be the correct answer, because ये statement ही incorrect है. The symbol of two ions are shown. You can see that fluoride ion and sodium ion both have the exact same electron, because there is a negative charge and there is a positive charge, with 11 atomic number and with 9 atomic number. The two ions contain the same number of protons. No, they do. They have different number of protons. Incorrect. Two ions contain the same number of electrons. This is correct. As I mentioned, both have the same 10 electrons.
Sodium ion contain more neutrons. So sodium has neutron कैसे find करेंगे? Difference. So both have exact same neutrons, 10. Fluoride ion contain more electron. No, the same. They contain same amount of electrons. Question number 3, which dot and cross diagram shows all the outer shell electron is not correct? This shows all, hydrogen के पास एक होता है, इसके पास भी एक है. So this is a correct diagram, but we are looking for an incorrect diagram. B is incorrect. Why B is incorrect, by the way? Anyone in the class? Why diagram B is not a correct diagram? You see the all outer shell electron involved in bonding is there. Then why it is not a correct? If you read the statement, it says showing all the outer electron. It's just not asking for the bonded electron. All का मतलब है chlorine is in group 7. It must have 7 electrons. 1 involved in bonding and other 6 are not involved in bonding. So it should be something like this is correct option, but incorrect diagram. Okay, what is incorrect over here? We know that oxygen has 6 electron in the valence shell. So देख लेते हैं क्या मसला है इसमें. 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के 6 दिखाए हुए. इस ऑक्सीजन के देखें 1 2 3 4 5 6 इसके दिखाए हुए. एंड देन इसके शेयर कितने हुए? अच्छा, ये तो परफेक्ट डायग्राम है. आई मीन ऑक्सीजन के भी 6 दिखाए हुए, कार्बन के भी 4 डॉट दिखाए हुए. सो दिस शोज द कंप्लीट 8 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज अ करेक्ट डायग्राम बट इनकरेक्ट ऑप्शन. इसमें देखो कार्बन के ऑल 4 दिखाए हुए, हाइड्रोजन का एक एक है. करेक्ट डायग्राम, बट वी आर लुकिंग फॉर एन इनकरेक्ट डायग्राम. इनकरेक्ट का मतलब जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन नहीं शो किए, एंड दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी. ओके. Which statement shows the graphite and diamond are the different forms of the carbon element? So we need to find a statement which refers that both elements are different form but of same element, which is nothing but carbon. Okay, graphite conduct electricity where diamond does not. This is a correct statement, but इससे हमें कैसे पता चलेगा कि they contain carbon atom? I mean, there are a lot of particles, lot of substances that do conduct, and there are a lot of substances that do not conduct. How do we know that they contain carbon atoms? So this is an incorrect statement, nothing to do with the question. So they have different melting point. I mean, diamond is more harder, have bit higher melting point than graphite. But how do we know it contains carbon atoms? So there are a lot of substances. मैं कहता हूँ इसका और इसका melting point भी different है. So do you think they contain carbon? No. इससे हमें कभी पता नहीं चलेगा कि carbon है या नहीं. Okay. Option number B. Complete combustion of equal mass of graphite. Okay, आपके पास ये आपको graphite दिया हुआ है और यहाँ पे आपको diamond दिया हुआ है. You are burning both substances in air. अच्छा, इसको भी बर्न किया, इसको भी बर्न किया. इन दोनों को बर्न करने से you get a same gas, carbon dioxide gas. तो जब आप इन दोनों को बर्न कर रहे हो और कार्बन डाई निकल रहा है, इसका मतलब both this substance and this substance contain carbon. Although they are different, one is graphite, one is diamond, but since upon combustion they produce same gas, that means they are the elements of the, I mean, they are the substances of the same elements. So they have joint structure, but इससे ये कभी नहीं पता चलेगा कि whether they are carbon or not. In order to form a compound with oxygen, an atom of group 2 must. We know group 2 element, they have 2 electron in the valence shell, so they must lose 2 electron. Oxygen is in group 6, it must accept those 6 electrons. So bond 2 atoms of oxygen, share 2 electron, receive 2 electron. A metal of group 2 must transfer 2 electron to an atom of oxygen. Option A is correct. Yes. Which statement about the isotope of bromine is correct? So bromine atomic number normally is 35 and it has 2 isotopes. One is 79 and other one is bromine 81. Not part of the syllabus, but अब वैसे आपको बता रहा हूँ, these are the isotopes. Isotope का concept तो हमारे syllabus में है ना. They have the different atomic mass but same atomic number. Okay, so they are the atoms of this with the same number of. They have the same number of protons and electrons. That is the different number of neutrons. Electrons and different number of protons. Do you think they have different number of protons, neutrons, and the same number of electrons? They are the atom with the same number of neutrons. How can they? Because they have the same number of neutrons. They have different number of neutrons, correct? They have the same number of protons
and the same chemical properties. I think ये ठीक लग रहा है क्योंकि उनके प्रोटॉन सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम है. Proton same है, and since electron are same, so they show same chemical properties. This should be correct. They have the same protons, correct? Do you think they show the same physical properties? Because they have different atomic masses, they differ in their physical properties. Option D is incorrect. Number 7. Compound Z is made from an element X. So X and element Y. So you have element X reacts with element Y to form a compound called Z. Z is a good conductor of electricity when molten but not in solid. So what is Z then? Something that conducts when molten and aqueous but does not when solid. It is nothing but an ionic compound. It should be solid at room temperature, correct? Then one of X and Y must be a metal and other one must be a non-metal. One must lose and one must gain. Let's read the full thing. Which statement is correct? Element X and Y both are non-metal. Do you think both two non-metal can make an ionic bond? No. Both metals can form metallic bond, ionic bond? No. They form metallic and these form covalent. Whenever you have two non-metal, they form covalent. Two metal form metallic. Okay. Compound Z has a strong forces of attraction between negative ion and positive ion. Look, compound Z is an ionic compound. Ionic compound is composed of the oppositely charged particles called negative and positive ions. And because of the strong attraction, it has high melting point. This is correct statement. Z has a strong forces of attraction called electrostatic forces. And due to the same reason, Z must have high melting and boiling point. Okay. So Z has a strong force of attraction between electron and positive ion. मुझे ये बताएं कि electron और positive ion किस structure में होते हैं? What sort of element have the forces of attraction between electron and positive ion? In metals, we know metals have tiny positive ions and there are electrons, and these attraction led to the formation of metallic bond. But compound Z is an ionic compound. It must have forces of attraction between oppositely charged ions. Copper wire is used to complete the electric circuit. There is a copper wire, you see. Wire contains metal ions and CF delocalized electron. I just mentioned. What happens in the copper wire? Electron move along the wire to the negative terminals. Positive ion stays in the position. Okay, so when you look at the metal, electron, they do move along the wire, but electron to khud negative. And do you think they must move toward the negative terminal? Electrons are negatively charged particle. They must move toward the positive terminal, correct? So this is an incorrect statement. Electron move along the wire to the positive terminal, correct statement. Positive ions move. We know positive ions, they do not move, they stay in the position. Another incorrect statement. Electrons move along the wire to the positive terminal. Positive ions remains unchanged, stay to the position. Correct. So metals conduct electricity when the electrons move from negative to positive terminal. Positive ions stays the same on their position. Negative ions move. There are no negative ions in the metal, so this is an incorrect statement. Ethene is a covalent compound with a simple molecular structure. Ethene. Ethene is a liquid at room temperature is pressure. So which statement about ethene is correct? Look, we know that first 4 members of alkane or alkene, they are gases at room temperature. Although it is covalent, it is not liquid because it is the first member of organic alkene family. It is not a liquid. Liquid ethene conduct electricity. No, it does not have any free moving ions, so it must not conduct because it is covalent. Covalent never conduct except graphite because it has free moving electron, only graphite. One ethene molecule contains 16 protons. Let's write the formula, C2H4. Now one carbon, इस पूरे molecule में it has 16 protons हैं. सबके proton add कर लेते हैं. One carbon have 6 protons times 2, and one hydrogen have 1 proton times 4 हो जाएंगे. So 12 plus 4, I think 16 proton makes sense. So C must be the correct option. Total number of shared pair of electron ethene is 5. We know that the structure of ethene, there should be a double bond, and each carbon is further bonded to 2 hydrogens.
So how many pairs? One line is actually a pair. A pair, two pair, three pair, four pair, five and six. So there are six pairs of electron. ये कितने कह रहा है? Five pairs. So they contain six pairs. An incorrect statement. All right. ये तो सबसे आसान है. Which diagram correctly shows the arrangement of ions in solid sodium chloride? Sodium chloride is an ionic compound. It is composed when oppositely charged ions are closely packed. So oppositely charged ions are closely packed. Oppositely charged ions, I said. Positive is directly connected to positive. An unnatural arrangement, incorrect. A positive and negative can no longer be, they stay, next to each other. यहाँ पे तो all four are positive. Incorrect. So we have negative and negative. Incorrect. Yes, in option number A, Aksa, we have positive. On all four directions, it is connected to negative, right? And similarly, if you look at any negative, you see it all possible direction, it is connected to positive. So option A makes sense. Yep. Which statement about the chlorine atoms and chloride ion is correct? I think ये तो कल भी हमने किया था something like this. Chlorine atom and chloride ion. Yep. Are they isotopes of each other? Isotope can never be an ion. So this can never act as an isotope. I mean chloride ion. They undergo the same chemical reactions. No, they have different number of electrons. They do never show the same chemical reactions. They have the same protons. Yes, this is correct because this is 17 and this is also 17. Right? They have the same physical properties. They show different physical properties. So this is also incorrect. A compound containing only elements carbon, hydrogen has 80% of carbon. What is the empirical formula? So there is a compound which contains only two elements, 80% carbon. If one is 80%, and since only two elements, the hydrogen must be 20%. Yep. And what is the molecular formula? Step 1, divide with the AR. Please do the maths. And step 2, get the smallest answer. So please, I want everyone to try this question. This is 6.67 and this has to be 20 because we are dividing it in 1. The smallest value is this one, right? So 20 over 6.67, it gives me 2.99, which is 3, and this should give me 1. So CH3, B must be correct. Yep. So whenever you are given with the percentage of 1 and there are only two elements, just subtract it from 100. One was 20, 80%, other has to be 20 because the total percentage is 100 always. And then step 1, divide with the AR of that atom, atomic mass se divide karna hai, and then find the answers, get the smallest one, divide it with all, get the simple ratio. Yep. An ionic compound has a formula XY and Y is a non-metal. If Y is a non-metal, X must lose and Y must gain. We're not sure how, but if one is ionic and Y is non-metal, so X must be a metal. Metal must transfer and non-metal must accept. Which statement is correct? XY not conduct electricity when liquid. They conduct when liquid because ionic compound conduct when molten due to the movement of free-moving oppositely charged ions. X is a non-metal. No, X has to be a metal because Y is a non-metal in the question it says. Both X and Y share a pair of electrons. It's an ionic compound. They never share. One must lose and other one must gain. An atom of X has lost at least one and the other to form a positive ion. That is correct because X is a metal. It must lose. Number 14. Welcome to our moles. Yep. Try करने जरा सब लोग शाबाश. Number 14. I want everyone to try 14 and 15 in 2 minutes. You can use this thing.
शाबाश, सब लोग ट्राई करेंगे एज एन इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग of the moles when it comes to especially gases, and I assume you all are working. $20. Okay. Number 15 से start कर लेते हैं. Aqueous copper 2 sulfate using copper electrode and carbon as a negative electrode. Okay, that's a different thing. So you are doing an electrolysis with anode made up of copper, cathode made up of graphite. So this is copper anode and this is carbon cathode. And what do you have? You have copper 2 sulfate aqueous as an electrolyte. That means you have copper ion, sulfate ion, hydrogen ions, and hydroxide ion. Now, since anode is made up of copper, hydroxide ion would never get reduced. It is the anode that loses. Whenever anode is made up of a reactive metal, it is the anode that loses electron to form, ions. So, a positive electrode pe kya hoga? It must dissolve. A or B should correct because it is made up of copper. Negative electrode pe the same copper ion must deposit. Copper deposits, right? Or electrolyte stays as constant as blue because देखो ये जो copper ions हैं they are not affected. कौन से copper ions उधर जा रहे हैं? यहाँ पे copper ions आ रहे हैं and those same copper ions are being deposited at cathode. So electrolyte would remain unchanged, right? So A must be correct. Okay. In an experiment, 1 cm cube of gaseous hydrocarbon. So we have hydrocarbon which is gaseous. Name is Z. Require 4 cm cube of oxygen. So 1 cm cube of this needs 4 cm cube of this. I told you whenever these are gases, you can compare the volume with the moles. That means 1 mole of this require 4 moles of this. For the complete combustion, to give 3 moles of carbon dioxide. So that means 3 CO2 are produced. And water has to be one of the other product as well. Okay, यहाँ पे देखें 3 carbon di का क्या मतलब है? How many carbon does this hydrocarbon must have? जितने कार्बन्स यहाँ पे होंगे सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाई. तो ये जो भी हाइड्रोकार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3. इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी लिस्ट से वैसे निकल गए बिकॉज दे आर गेटिंग 3 कार्बन डाई. 3 कार्बन डाई वही बनाएगा जिसमें 3 कार्बन्स होंगे. ओके, नाउ आइदर इट इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज C3H4. अब हमने इसको बैलेंस करना है ऐसे कि 1 mole of this must react with 4 moles of this to produce 3 moles of carbon dioxide. चलो देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे मुझे 4 लगाना ही लगाना है क्योंकि उसने कहा 1 of this to react with 4 of this or to produce 3 of this. ओके, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं. इधर कितने हाइड्रोजन है? 4. तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा. जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस है 3 2 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन एंड 4 2 8. आई थिंक ये करेक्ट है, इसमें बैलेंस हो गई. अब हम ऑप्शन डी में देखेंगे वहां पे बैलेंस नहीं होगी. ऐसे देखना जरा. सो विद 3 moles of in fact 4 moles of carbon di, 4 moles of oxygen to produce 3 moles of carbon di and water. तो क्या ये बैलेंस है? लेट्स बैलेंस द हाइड्रोजन्स. तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं 4 लगा दूं. अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन देखना बैलेंस है या नहीं. तो 6 ऑक्सीजन ये हैं, 3 2 6 एंड 4 10. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 8. 4 2 8. So it doesn't balance with the ratio that is given in the question. Balance किसके साथ हुई है? C के साथ. So C must be correct. I'm sure आपने भी ऐसे किया. Yes. Molten salt of 4 metals are electrolyzed. So we have molten salt of the 4 metals that are being electrolyzed. Ions of which metal require the smallest number of electrons for 1 mole of atom to be liberated at electrolysis? Okay. So we know that, let's assume aluminum. इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? 3+. If we want to deposit aluminum in the atomic form, how many electrons should I give to aluminum? It depends on the amount of charge. So 1 mole of aluminum atom required 3 moles of electron for the complete reduction and to deposit in the atomic form. Calcium group 2 में है तो +2 charge होगा.
एल्यूमिनियम +3 होगा, आयरन +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, सोडियम +1 है. सो विच मेटल रिक्वायर द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. विच मेटल? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट हैज अ +1 चार्ज. इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट डिपॉजिट ऑन इन द एटॉमिक फॉर्म. This is very important. I want everyone to try number 17 and 18 in another 2 minutes. From moles, and one is from moles, and another one is from electron. Shabash. Done. Number 17, जिसने किया उसको 10 रुपए दूंगा. Haris, you willing to get the prize money? Hamza, Iman, anyone with the correct reason and answer of number 17? Umaima? Done. Okay. Okay, let's start with number 17. So the formula of hydrated copper 2 nitrate is this thing, where copper nitrate is given, but they have not tell us what is the exact number of water. But उसने कहा कि it contains this much of water, 36.5. If it contain this much of water, तो बाकी क्या होगा? बाकी तो होगा nitrate. So let's subtract 100 minus 36.5 will get you 63.5% of the whole copper to nitrate. Yep. You can use a simple trick, the step which we use for the empirical formula. So let's divide with the MR of the whole thing. Copper is 64 and कैसे इसका कर ले 64 प्लस देखो नाइट्रेट का क्या होगा नाइट्रोजन इज 14 प्लस 3 टाइम्स 16 62 नाइट्रेट का टाइम्स 2 कर देते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा 144 प्लस 64 विल गिव यू 208 इस पूरे का एमआर है 208 वाटर का तो हमें पता है 18 होता है ठीक है लेट्स यूज द सिंपल लॉजिक अगेन 63.5 ओवर 208 will give you कितना आएगा 0.305 and for water which is 36.5 over 18 कितना आएगा 2.02 which is the smallest answer of course this one 305 0.305 so क्या आंसर आएगा you know I'm better at maths better than you so इसमें क्या आएगा 2.02 over 0.305 will give you how much 6.6
Am I audible now? Am I audible? अच्छा मुझे बताएं इसका MR 208 ही आ रहा है. मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि आंसर उसका मैच नहीं कर रहा. MR is 208. It would be 62 208. तो फिर तो ठीक आना चाहिए. 63.5 over 208 is 0.305, correct. उसका 36.5 है उसमें, that is given. 36.5 over 18 is 2.207. लिखते हैं डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर देते हैं. इसका 1 आएगा. 2.0. इसका 188 है. For हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं. चलो मैं खुद ही सॉल्व. 64 plus 62 times 62 times 2 plus 60. तो 188 ही रहा. तो पहले क्यों 188 है, इसलिए आंसर ठीक नहीं आ रहा. सो 188 here. जाग रहे हो भाई? मैं अकेला तो नहीं कर रहा, तुम लोग साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बस कनेक्ट करके सो गए. 0.3377. अगेन द स्मॉलेस्ट यही है और इसका सब भी यही है. इसका 1 आएगा. इसका देख लेते हैं क्या आएगा. 2.0277 over 0.3377. 6 exact 6 hours. What is the correct answer then? It has to be. You have to treat very similar to the way we do empirical formula. Given with the percentage of 1, find the percentage of other, divide with the MR, get the smallest answer, divide with all, and get the answer. Number 18, dilute sulfuric acid is electrolyte between inert electrode. You know, sulfuric acid is H2SO4. It will produce hydrogen ions. The sulfate ion, since it is dilute, I mean it is aqueous, it should produce the same H plus ion and hydroxide. तो हमने ट्रिलियंस टाइम्स किया. तो यहाँ से ये जाएगा, बनाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ से ये बनाएगा हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन इज रिलीज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन इज रिलीज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है. ऑक्सीजन इज रिलीज एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये भी ठीक है. सल्फर डाई इज नॉट रिलीज. एसिड बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड. ये बात भी ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से H किया, यहाँ से OH किया, तो वाटर eventually evaporate होगा, तो एसिड होगा, that will become more concentrated. 1, 2 and 4, A must be correct. Yep. Okay. So electrolysis का बड़ा interesting question आने वाला है. Ready everyone? Concentrated aqueous calcium iodide. So you have concentrated and a halogen atom इसमें. ठीक है. तो क्योंकि ये concentrated है और calcium iodide produce बनाएगा, और क्योंकि aqueous है तो ये भी होंगे. तो since it is concentrated, it must produce iodine. और यहाँ से इट मस्ट प्रोड्यूस हाइड्रोजन. तो ये कैटाइन कैथोड पे जाएगा और एनाइन एनोड पे जाएगा. व्हाट वुड बी फॉर्म्ड एट पॉजिटिव? पॉजिटिव इज एनोड. क्या बनेगा? आयोडीन. नेगेटिव पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन. बी मस्ट बी करेक्ट. ओके, मोल्स क्वेश्चन. 50 cm cube of 1 mole per dm cube of silver nitrate is added to this much of sodium chloride. Okay. So let's first get the moles. Silver nitrate hai. N is C is given as 0.1. This is C. And V is given as 50. To divide it with 1000 to get the decimeter cube. Let's find the moles. So 0.1 times 0.05. So ये हमारे पास बनेगा 5 into 10 raised to negative 3. ये सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स आ गए. इसको हमने ऐड किया NaCl. NaCl में भी हम सेम करेंगे. 150 is the volume and this much is concentration. Concentration is 0.05. क्योंकि ये वॉल्यूम CM में है तो DM में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया. So 0.05 times 0.15. तो ये इसके मोल्स आते हैं बेटा 7.5 into 10 raised to negative 3. Okay. So let's make the equation now. So we know that whenever you react silver nitrate aqueous, nitrate are always aqueous and sodium are always aqueous.
Important question. So what do will make? Silver ion will get the chloride ion to form the precipitate of AgCl. ये बनेंगे insoluble salt, and you will get the sodium nitrate as other aqueous salt. ठीक है, ये बन गया. Okay. So as well as solid silver chloride, वो तो उसने बता दिया कि ये तो बनेगा. What is present in the beaker after the reaction? After the reaction क्या बचेगा? Silver nitrate, I mean sodium nitrate. लेकिन एक और चीज भी बचेगी, वो क्या होगी? Which is present after the reaction once you filter off the silver chloride. What could other possibly be present in this beaker? Why NaCl? Excellent, Zamir. Why NaCl? देखो, excellent. Since one of the reactant is an excess, आपने इन दोनों को मिक्स किया, you mix these two solutions, they react. अब जो reactant ज्यादा अमाउंट में है, वो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी पड़ा होगा ना. मैं आपको बताया था शायद. फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ फॉरेस्ट फायर फ्यू इयर्स बैक. देयर वाज अ फॉरेस्ट फायर एट, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. तो इट वाज लाइक काफी दिनों तक चल रहा था, 5, 10, 20 डेज तक वो फॉरेस्ट फायर लगी रही. तो फायर इज अ रिएक्शन बिटवीन वुड एंड ऑक्सीजन. तो वो कब स्टॉप हुई थी फायर? व्हेन दैट वुडन रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट थे ना, एक वुड थी एक ऑक्सीजन थी. क्या ऑक्सीजन खत्म हो गई थी या वुड खत्म हुई थी? वुड खत्म हुई थी. ऑक्सीजन कैन नेवर रन ऑफ, नहीं हो सकती है. इसका मतलब even after the reaction oxygen was there, so that reactant which is in excess, it is there even after the reaction gone to completion. तो silver nitrate की moles कम है और NaCl के moles ज्यादा है, and they react in a ratio of 1:1. तो जिसके ज्यादा moles होंगे वो reaction के बाद sodium nitrate भी होगा, और वो भी होगा which is in excess. So sodium chloride and silver nitrate, B must be correct. sodium chloride भी है और sodium nitrate तो बना हुआ है, I mean, as a product. So B must be correct. Make sense, everyone? Nitrogen monoxide and oxygen react to form nitrogen dioxide. I told you, whenever, if any one of you is aiming, inshallah, हम सब aim कर रहे हैं the full marks, but उसके लिए आपको पता है you have to थोड़ा सा effort करनी पड़ेगी ना. तो effort ये है कि वर्कशीट दी है, इसके पूरे 100 MCQs की आपको solution with logic आएगी. तो I have no doubt कि आप कल इंशाल्लाह बहुत बेहतर करने वाले हैं. Nitrogen monoxide react with oxygen to form NO2. What is the maximum volume of nitrogen dioxide could be obtained when 1 dm cube reacts with 2 decimeter? देखो ये scam है. It's a scam. Nitrogen mono reacts with oxygen to form NO2. अब look at the balance ratio. इसके 2 होंगे, इसका 1 होगा, और इससे कितने बनेंगे? 2. अब वो कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, इसका क्या वॉल्यूम बनेगा व्हेन यू हैव 1 dm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनो. लुक एट दिस, 1 dm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनो. अब मुझे बताओ, इफ आई हैव 1 dm क्यूब व्हिच मीन आई हैव 1 मोल. गैसेस में यू कैन कंपेयर द वॉल्यूम एज देयर मोल्स. इफ आई हैव 1 मोल ऑफ दिस, देखो अगर इसके 2 हैं तो ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है. इसके 2 होंगे, ऑक्सीजन का 1 होगा, तो NO2 के कितने बनेंगे? 2. दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन. बट अगर इसके 1 है तो हाउ मेनी ऑफ ऑक्सीजन आई नीड? कितने चाहिए ऑक्सीजन के मोल? हाउ मेनी मोल्स और वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO? उसका हाफ चाहिए ना. देख लो ना भाई, इसके 2 हैं तो इसका 1, अगर इसका 1 है तो इसके 0.5. तो आपने ये नहीं देखना तो क्वेश्चन में कितने गिवन है. क्वेश्चन में तो उसने कहा 2 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. तो 2 dm क्यूब में से हमें 0.5 चाहिए, बाकी जो 1.5 है क्या, वो क्या हो जाएगा? 1.5 of oxygen is in excess, just like the previous question where sodium nitrate was in excess. अच्छा, अगर इसके 0.5 रिएक्ट करेंगे तो मुझे बताओ NO2 के कितने बनेंगे? NO2 के कितने बनेंगे? अगर इसके 2 हैं तो इसके भी 2, इसके 1 है तो इसके भी 1. A must be correct. लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस produced after the reaction, आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, इसका 1 था और इसके 2 थे, इसका 1 और इसके 2. Even after the reaction is finished, what is the total volume of the gases present after the reaction is gone to completion? तो टोटल में फिर 1 नहीं होगा, 1 तो इसका है और 1.5 इसके भी तो बचे हुए ना, तो फिर टोटल में 2.5 आएंगे. लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ हमें नाइट्रोजन का पूछा है, तो A is correct. Make sense everyone? Yes. सर, Yes. आप शुरू से समझा सकते हैं, मुझे नहीं समझ आई. बेटा मैंने कहा कि these are the gases and gases are given with the volumes.
You can compare the volume of gas and you can take it as the moles. उनको moles ही consider करना है. अब आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि इसके 2 मोल्स हैं बैलेंस इक्वेशन में, इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं और इसके 2 मोल्स बना रहे हैं. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. फिर उसने कहा कि अगर बताएं कि NO का कितना, NO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा व्हेन यू हैव 1 मोल ऑफ NO रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो मैंने कहा ठीक है, अगर इसका 1 मोल होगा तो मुझे ऑक्सीजन के चाहिए कितने, आई नीड हाफ ऑफ ऑक्सीजन. उसने तो क्वेश्चन में 2 गिवन है विच इज अ स्कैम. हमें तो हाफ चाहिए क्योंकि रेशियो ये कह रही है अगर इसके 2 होंगे तो इसका 1 चाहिए, लेकिन अगर इसका 1 है तो इसके हाफ. तो अगर इसका 1 होगा तो इसका भी तो 1 ही बनेगा. रेशियो देखो 1:1 नहीं, तो फिर इसका 1 मोल इज प्रोड्यूस्ड. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, अनदर स्कैम, इज शोन. इट मीन फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड एंडो है या एक्सो है. दिस represents reactant and this is the products. Product have high energy. It's an endothermic reaction. Enthalpy is positive. Yes. For the reverse reaction, देखो बताया उसने फॉरवर्ड का, पूछा किसका है, रिवर्स का. For the reverse reaction, which row shows the sign of activation? देखो if forward is endo, forward endo मैंने बताया, तो बैकवर्ड क्या होगा. लेट्स अज्यूम ये वाला रिएक्शन जिसका फॉरवर्ड रिलीजेस हीट. अगर किसी का फॉरवर्ड हीट रिलीज करता है तो बैकवर्ड क्या होना चाहिए, मस्ट एब्जॉर्ब हीट. उसने फॉर द रिवर्स रिएक्शन पूछा, तो मेक श्योर यू रीड द एंटायर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. For the reverse reaction, which row correctly shows the sign of activation? Does not matter whether the reaction is endo or exo, activation always positive. Activation is always positive. But since the forward is positive, backward has to be negative. Make sense, everyone? Yes. क्या मतलब? हाँ, ठीक. The formation of liquid water from hydrogen and oxygen may occur in 3 stages. So in the first stage, hydrogen molecule reacts with oxygen molecule to form. नहीं, इसमें तो react किया ही नहीं है. पहले स्टेप में क्या हो रहा है? What is happening in the first step? The molecule, the bond between hydrogen atoms breaks and you get the atoms. 2 atoms आपको मिल गए. इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. इसी तरह ऑक्सीजन में भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. देयर वाज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ब्रेक करके यू गॉट 2 ऑक्सीजन. तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज हैपनिंग. बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. सो स्टेप 1 इज ओनली एंडो. स्टेप 2 में क्या हो रहा है? लुक एट स्टेप 2. Those atoms will react in a certain ratio to make the bond. इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही, सिर्फ मेकिंग हो रही है. तो मेकिंग इज एक्सो. थर्ड में क्या हो रहा है? A gas is being condensed to liquid. तो देखो अगर लिक्विड में गैस ने जाना है तो बॉयल होगा, अब्जॉर्ब होगा. अब गैस वापस लिक्विड में आ रही है तो एनर्जी रिलीज करेगी, ये भी एक्सो. तो उसने पूछा है व्हाट वुड बी एक्सो 2 and 3. यस, 1 is एंड. ट्राई करें जरा सबक 24 and 5. I'll be back in a minute.
All right, done everyone. भाई गर्मी season. So गर्मी again started. और सुबह सुबह ही I think it's very hot. Done with both questions? Excellent. 25 try करें. At the start of a reaction, 1 decimeter cube solution contains 0.3 moles of ethanol. So the total volume of the solution is 1 dm cube. And in that total volume, we have, imagine you have this much volume, which is 1 dm cube. And in this 1 dm cube, you have 0.3 moles of ethanol, which is C2H5OH. These are the moles. After 100 seconds, the concentration of ethanol has decreased to this much. Okay, let's first find the concentration, initial and final, and then we can get the over order fraction in 100 seconds. Initial concentration कितनी थी? देखो concentration होती है N over V. Since N is C into V, if I want to get C, it should be N over V. So number of moles है 0.3 और volume 1 है तो इसकी concentration होगी 0.3 moles per dm. That is the initial concentration. After 100 seconds, ये जो 0.3 it has decreased to 0.296 mole per dm. मुझे बताओ change कितना आया? So हम इसको change in concentration कर लेते हैं 0.3 minus 0.296. So कितना change आया है? The change in concentration is 0.004 mole per dm cube. कितने टाइम में आया है? 100 seconds में. तो हमने रेट फाइंड करना है. तो रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम. ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है 0.004 और टाइम उसने बता दिया 100 सेकंड्स है. तो बस मैथ्स कर लो बस. 0.004 ओवर 100 कितना आंसर आ रहा है? 4 × 10⁻⁵ है कोई ऑप्शन? यस, सी मस्ट बी करेक्ट. सबको समझ आई बात? यस, ऐसे किया था आप सबने भी. तो अगर वो आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी पूछे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. एंड नॉर्मली यूनिट टाइम की जो यूनिट स्टैंडर्ड है वो सेकंड्स ही होती है. Okay. So sulfur dye reacts with oxygen to form sulfur tri. I think we did the same question yesterday. The forward reaction is exothermic. On this side, we have 3 moles of gas, 2 moles of gas, forward is exo. What would decrease the yield? That means we have to do such things so that equilibrium goes to the left. Addition of more oxygen, shift to the right. एक साइड ज्यादा होगी तो दूसरी साइड पे चला जाएगा राइट पे. Increase the pressure, goes to the less moles of gas. ये भी राइट पे चला जाएगा. Increasing the temperature does. ये कल आई थिंक हमने सेम क्वेश्चन किया था. So, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्योंकि फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगा. जब बैकवर्ड जाएगा तो सल्फर ट्राई की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. रिमूवल, अगर आप सल्फर ट्राई निकालोगे तो इक्विलिब्रियम उसी तरफ जाता है जो कम होता है. तो इट इज इनकरेक्ट. When the aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed, aqueous copper using copper electrode. So this time we have aqueous copper 2 sulfate. Right, copper electrode है. इसके में होगा क्या? एनोड पे, एनोड इज मेड अप ऑफ कॉपर. तो कॉपर आयंस आर, कॉपर एटम आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कॉपर आयंस. ये एनोड की बिना. कैथोड पे दो सेम कॉपर आयंस, दो सेम कॉपर आयंस will accept electron to form pink solid. तो फिर हम ये रिएक्शन करते हैं कि हमें दोनों रिवर्स हो रहे हैं टू प्योरीफाई द मेटल्स. इससे होगा ये कि कैथोड पे सिर्फ प्योर मेटल डिपॉजिट होगी. हो सकता है एनोड इज नॉट मेड अप ऑफ प्योर. तो जब भी किसी चीज की प्योरिफिकेशन करते हैं उसको इम्प्योर हमेशा एनोड पे लेते हैं और इसी का रेफरेंस प्योर कैथोड पे लेते हैं. तो पॉजिटिव एनोड पे इलेक्ट्रोड बिकम्स स्मॉलर, negative electrode gets bigger and intensity of the blue color stays the same. A must be correct.
क्योंकि हमने इसको तो नहीं छेड़ा ना, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग the electrolyte. It stays the same. So intensity of the blue color, which was due to the copper ions, remains unchanged. 3 different stages, different solutions were electrolyte using inert electrolyte. कार्बन है, एक्वस है, अच्छा एक्वस जो भी एक्वस होगा, डजेंट मैटर कौन सा एक्वस, ठीक है, उसमें एक्सेप्ट के वो कॉपर ना हो, तो एनोड पे आपको हमेशा ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पे आपको इट इज ऑलवेज हाइड्रोजन। ये तो आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोलिसिस का एमसीक्यू गलत करना बनता नहीं। व्हेनेवर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और उसमें कोई हेलोजन है, ठीक है, तो उसमें एनोड पे जाएगा हेलोजन और कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही जाएगा, और ये डाइल्यूट है, इसके और उसके प्रोडक्ट सेम है। विच सोल्यूशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो तीनों में बन रही है, तीनों वाला का ऑप्शन है, हाइड्रोजन तो तीनों में बन रही नेगेटिव पे, इसमें भी नेगेटिव पे बन रही, इसमें भी बन रही है और इसमें भी बनेगी, ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, सबको समझ आ गई बात। Which changes always occur when a metal atom is oxidized? Metal atom is oxidized. You know? अच्छा, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ना, उसको हम गैस लिखते हैं। वैसे अभी आप इसको सॉलिड लिख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ए लेवल्स में हम देखेंगे कि एटम को हम पहले गैस बनाते हैं, देन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ओके, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, यही ठीक है। इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, नो। It gains electrons, no. You can never add protons, so it become positively charged ion. You see, whenever a metal is oxidized, it become positively charged. Simple, easy, bro. Under certain conditions, nitrogen reacts with oxygen to form N2O, dinitrogen oxide. Profile gram is given, that means the reaction has a positive enthalpy, which means it is endothermic. The activation energy for the, there's another scam spotted for the reverse reaction. Imagine we are doing this reaction. This is forward reaction. In the forward reaction, these are the reactants and this is the products. ऐसा ही है, ये reactants हैं, ये product. In the forward, backward में क्या होगा? This is the reactant, this is your product. तो बैकवर्ड में जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट बिकम रिएक्टेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अब आपने ये अज्यूम करना है कि ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स। अब हमने इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी ये वाली 447, ठीक है, अब वो थी यहां से स्टार्ट हो, यहां से यहां वाली एनर्जी अगर हम माइनस कर दें उसमें से, तो सिर्फ जो ऊपर वाली एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन होगी ऑफ रिवर्स। और हम क्या करेंगे, अब हम 447 से यहां वाली माइनस कर देंगे, -164, तो क्या आएगा? इट शुड बी पॉजिटिव, आई थिंक इट हैज टू बी, क्या आना चाहिए? मुझे तो ये लग रहा है आंसर ये क्लोज है। यस, ऐसे मैथ्स कर, तुक्का नहीं करना चाहिए। तो 447 -164, 283 exact, and it has to be positive. Activation can never become negative. Make sense, everyone? Okay, compound Y reacts with oxygen. This reaction has a positive enthalpy change. Endo abhi. What information can be deduced about Y and this reaction? Y reacts with oxygen. ठीक है, अच्छा बेटा, अगर तो कोई रिएक्शन जिसकी नेगेटिव, जिसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं और वो नेगेटिव एंथैल्पी, इसका मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है एंड इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल हम उसी चीज का यूज करते हैं, समथिंग दैट रिलीजेस एनर्जी। तो कंपाउंड वाई को तो एनर्जी चाहिए, द एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव, so it cannot be a fuel. Y is a hydrocarbon, तो fuel होते हैं, they release energy. In this reaction, energy needed to break a bonds is greater than energy release. I think ये बात ठीक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, तो जो एनर्जी यूज हुई है that is more than the energy release. That is why the enthalpy is positive. In this reaction, the products have low energy. Product must have high because it is endo. Yep. So again, a full knowledge of your
Understanding about exo and endo is needed. Magnesium reacts with dilute sulfuric acid. You see, magnesium is reacting with sulfuric acid. In experiment 1, 2 experiments were carried out. 24 gram of magnesium reacts with this much volume and concentration of sulfuric acid, which is, let's get the moles. N is C times V. C is 1 and V is 100 over 1000 will give us 0.1 mole per dm cube. That's the concentration in the first reaction. In the second reaction, we use the same amount of magnesium, but a lesser volume and a high concentration. तो reaction ज़्यादा fast होगा because a more constant. लेकिन moles अगर same है तो volume of gas same produce होगा. So N is C into V. C is 2 and V is 50 and over 1000. तो क्या बनेगा? I think ये भी 0.1 ही बनेगा. तो mole same है, ठीक है? 0.05 times 2 will give me the same 0.1. देखो moles दोनों में same है, लेकिन fast reaction कौन सा होगा? Experiment 2 और experiment 1? 2. Because 2 में this is experiment 2, the dotted lines. 2 must be more quicker. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें तो 2 slow है, ये होगा. 2 is more fast, but it produces the same volume of gas as 1, because in both you have the same number of moles of the reactants. So they must produce same amount of gas, but at different rate, because this experiment 2 we are using a more concentrated acid. Yes. Which statement is correct about aluminum and iron? Both form 2 positive. Aluminum form 3 positive since it lives in group 3. Both are amphoteric. Iron is basic, like least basic. Now aluminum is amphoteric. Manufacturing of both metals involve the reduction of metal ions. I think ये बात ठीक है. Aluminum को extract करना होगा तो aluminum 3+ को electron देते हैं और वो it deposits at cathode. आयरन की रिडक्शन के लिए ये याद है Fe2O3 की करते थे, CO के साथ करते थे, ठीक है? तो ये +2 है, +3 है यहाँ पे आयरन. तो आयरन किस में चला जाता था? सिंपल आयरन. सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोथ मेटल इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस. यहाँ पे ये मेटल आयन था, यहाँ पे ये मेटल आयन, एंड दे आर रिड्यूस्ड. दिस इज करेक्ट. They both normally manufactured by electrolysis. Aluminum is extracted by electrolysis, but iron does not. We use blast furnace reduction with carbon for iron. So this is an incorrect statement. Okay. Number 33 and 4, everyone. $33 is a little different. So does 34. That's why I want everyone to try. इंशाल्लाह 50 आज करेंगे, 50 शाम में करेंगे. और ये वर्कशीट अभी आपको कंप्लीट मिल जाएगी of 100 MCQ. Print and solve. Everyone. All right. So W has the following properties. When added excess of solid ammonium chloride, which is NH4Cl, a gas is given off that turns red litmus paper blue. वो कौन सी gas है? It's ammonia gas. मुझे बताएं, if something contain ammonium, तो what is needed to react with ammonium to produce ammonia gas? Hydroxide. ठीक है? Aqueous solution of hydroxide ions. इसका मतलब ये है कि W is not an acid. A और C तो निकल गए.
When added in excess of solution of pH 3, the resulting solution has a pH of 13. तो पहले आपके पास एसिड था, आपने उसमें W सोल्यूशन ऐड किया और W ऐड करने से उसकी pH 13 pH किसकी होती है? स्ट्रॉन्ग बेस। इट शुड बी अ बी। सबको समझ आ गई बात? अब आपने W ऐड किया और W ने OH रिलीज किए, इतने रिलीज किए कि उसकी जो फाइनल pH है वो 13 हो गई। 13 का मतलब इट शुड बी स्ट्रांगली एल्कलाइन। A compound dechlorize KMnO4. तो KMnO4 is oxidizing agent, goes from purple to colorless. वो जो कंपाउंड होगा वो क्या होना चाहिए? If this is oxidizing agent, compound must be a reducing agent. Correct? What could be compound? मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, तो आयरन हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता। मुझे बताएं कि आयरन +2 है, तो आयरन, डू यू थिंक आयरन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन? समथिंग दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड, तो यस, आयरन 2+ कैन लूज अनदर इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयरन 3+। इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात ठीक है। ओके, अब मुझे बताएं कि एथेनॉल, डू यू थिंक एथेनॉल रिएक्ट्स विद KMnO4? यस, हमने पढ़ा हुआ है। आप एथेनॉल में KMnO4 ऐड करें, ऑक्सीडाइज होगा तो एथेनोइक एसिड क्या बनेगा? आई मीन एथेनॉल किस में चला जाएगा? एथेनोइक एसिड में। तो डीक्लोराइज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो 2 and 3 सी शुड बी करेक्ट। लेकिन ऑप्शन 2 में बच्चे स्कैम करते हैं कि सर आयरन कैसे करेगा? करेगा, बिकॉज समथिंग दैट is oxidize itself, able to oxidize itself, can reduce the other substance and can dechlorize KMnO4 here. Sense? Yes? बस करीब ही पहुंच गए इंशाल्लाह। आई होप कि आप के लिए this session is adding to some knowledge and understanding of more and more about the same. So that's what is required and that's the aim of the class. Number 35. Pure lead 2 sulfate is prepared by mixing two substances X and Y. So remember, we are making pure lead 2 sulfate. We know lead 2 sulfate is insoluble. How do I know? LCB. For sulfate, LCB, lead sulfate, calcium sulfate, barium. So lead sulfate is insoluble, must be prepared through precipitation. One of the reactant must have lead and the other must have sulfate. So we know that the compound that contain lead can never be a carbonate because lead carbonate is insoluble. All carbonates are insoluble except sodium, potassium and ammonium. तो ये तो lead carbonate है, तो soluble ही नहीं। We need to start with a reactant which contain lead and it must be soluble. और मैंने आपको बताया हुआ आपने हमेशा नाइट्रेट ही लेना, lead 2 nitrate, correct, A और B. Now substance Y must have sulfate ion, और मैंने आपको बताया हुआ हमेशा सोडियम ही ले लो, उसने भी सोडियम दिया, because all sodium are solid, mix करोगे you get lead nitrate. अच्छा, अब आपने फिल्टर कर लिया, the residue is your lead sulfate. अब आपने क्या करना है? आप डू यू थिंक क्रिस्टलाइज द फिल्ट्रेट, आप उस फिल्ट्रेट को क्रिस्टलाइज करोगे टू गेट प्योर लेड, और यू नीड टू वॉश विद द रेजिड्यू? देखो फिल्ट्रेट में तो सोडियम नाइट्रेट आ गया ना, हमें तो रेजिड्यू चाहिए विच कंटेन लेड सल्फेट। तो उस लेड सल्फेट को यू नीड टू वॉश इट विद वाटर टू रिमूव if any of the crystals of sodium nitrate has attached to get the pure lead. So it should be B. All entries of B is correct. Which statement is correct? Solid soil with a high pH can be neutralized by adding. देखो जिसकी pH हाई होगी वो तो लेस एसिडिक होगा, तो लेस एसिडिक तो पहले न्यूट्रल होते हैं या तो पहले ही अल्कलाइन होते हैं, ये भी अल्कली, इसकी pH भी हाई है। A neutral solution does not contain hydroxide ion. हो सकते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब होता है जितने H+ आयन है उतने OH आयंस, अगर उसमें OH आयंस हैं और सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं तो इट इज पॉसिबल, आई मीन हाइड्रोक्साइड उसमें हो सकते हैं। सो amphoteric oxide are the oxide of certain metals. अच्छा, आई थिंक
Okay, so we know that amphoteric oxide हमारे syllabus में दो है. कौन-कौन से हैं? Aluminum oxide and zinc oxide. These are the only two amphoteric in art. Zinc is metal, aluminum is metal. Amphoteric oxide are of some metals. B is correct. Ammonia is produced when ammonium salt is warmed with acid. No. When ammonium salt is warmed with an alkali, only then you can have ammonia, not with acid. A is incorrect. Which reagent can be used to react with dilute HCl to prepare silver chloride? So अब देखो ना यार, Cl तो यहां से आ जाएगा. अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें सिल्वर हो और वो वाटर में सॉल्युबल हो. तो सिल्वर नाइट्रेट इज अ परफेक्ट थिंग. जो भी चीज है उसका नाइट्रेट ले लो, दैट शुड बी सॉल्युबल. इसको बेटा हीट करो, विल गेट सिल्वर नाइट्रेट, आई मीन सिल्वर क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन, और यू कैन फिल्टर इट आउट. सिल्वर, सॉलिड सिल्वर तो उसमें सॉल्युबल ही नहीं होगी. कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है, मेटल ऑक्साइड भी इनसॉल्युबल होता है. A household cleaning compound is used to remove calcium carbonate from the bathrooms. Calcium carbonate, limestone होता है. Which compound reacts with calcium carbonate to form a soluble salt, carbon dye, and water? That's an excellent question. Now we need to react something with metal carbonate to form CO2. तो मुझे बताओ कब ये CO2 से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा? When you react it with a pH of 14 or pH of 10 or pH of 7. We must react the metal carbonate with an acid to produce carbon dioxide. तो ये alkali है, ये भी alkali है, ये तो neutral है. We need a strong acid. An easy question. Dilute HCl is added separately to the sample of copper. No reaction because copper is less reactive than hydrogen. Copper 2 oxide के साथ करेगा to get copper chloride. Copper 2 chloride soda to react with copper carbonate. D होना चाहिए. It must not react with copper. It reacts with others. Which ions are present when HCl exactly neutralizes the sodium hydroxide ions? So HCl reacts with sodium hydroxide ion. No matter if it neutralizes or not, I mean, दिखने में ये बनेगा, you'll get NaCl and you'll get water, right? Correct. But we know water is a weak electrolyte, तो ये भी ionic form में होगा और ये भी ionic form में होगा. तो eventually ये जो चारों हैं, all four will be present in the form of ions. You will have sodium ions, the chloride ion, the hydrogen ion, and the hydroxide ion. तो ions तो आपके पास चारों पड़ेंगे. उसमें which ions are present? Ions चारों, लेकिन solution is neutral. Why? Because the number of hydroxide ion is the same as the number of hydrogen ion. Both are same. pH is 7, neutral, but they are still ions. बात में क्या कर रहे हैं? All right. I want everyone to try number 41 and 42, please. आज नहीं थकना ना, आज तो आपने काम करना है. अभी एक पेपर भेजूंगा इसके बाद and then there will be a worksheet. इंशाल्लाह. Twenty seconds. Done. All right. The water in the lake is acidic and the fishes are dying. The water in the lake needs to be neutralized.
Which compound is added in excess to neutralize the water in the lake? So it's acidic and you must add an alkali. आपने क्या ऐड करना है? An alkali. Sodium nitrate is a salt. Potassium hydroxide is a very strong alkali. देखो ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर, नॉट गुड, ये तो पहले से ही एसिड है. कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड, उसने एक्सेस में लिखा हुआ है. हाँ, अगर तो आपने एग्जैक्ट न्यूट्रल करना होता तो केवेच भी ठीक था. कैल्शियम कार्बोनेट आप एक्सेस में भी ऐड कर दोगे तो इट विल जस्ट न्यूट्रलाइज एंड वुड बी गुड फॉर द वाटर, टू फॉर द मरीन लाइफ. केवेच इज टू एल्कलाइन, वुड कॉज प्रॉब्लम. पहले एसिडिक से मर रही थी, फिर एल्कलाइन से बेचारों की डेथ हो. Which experiment will result in the formation of white PPT? You need to carry a reaction in which you get an insoluble salt. ठीक है. Barium nitrate with sodium chloride. तो क्या मिलेगा आपको? Barium nitrate aqueous. You add sodium chloride. तो इसमें देखो barium chloride बनेगा. You'll get BaCl2 and you get sodium nitrate. देखो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है ना, क्लोराइड तो इनसॉल्युबल है. आई मीन बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, क्लोराइड तो सॉल्युबल है. वी नीड एन इनसॉल्युबल टू गेट व्हाइट पीपीटी. सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड. तो इसमें क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. देखो इसकी इक्वेशन में लिख देता हूँ. सो द सेकंड वन इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज एडेड टू एक्वस कैल्शियम क्लोराइड. क्या बनेगा? You will get sodium chloride NaCl, which is aqueous, and you will get calcium carbonate. All carbonate are insoluble except sodium, potassium, and ammonium. This carbonate would be insoluble, form white precipitate. Carbon dioxide pass through the potassium chloride. कुछ भी नहीं होगा. क्या होगा? Hydrochloric acid is aqueous ammonia. क्या होगा? I don't think neutralization reaction होगा. ये acid है और aqueous ammonia alkali होती है. No precipitate, no white PPT. Two incomplete statements about the preparation of an insoluble salt are given. Precipitation can be used to prepare insoluble salt, such as, अच्छा जब precipitation करते हैं तो you need to mix two aqueous salt. आपने यहाँ पे कोई aqueous salt लेना. lead sulfate is insoluble. lead sulfate insoluble है, ये भी गया, A आंसर. नाइट्रेट लेना है, फिर सॉल्ट इज कलेक्टेड बाय फिल्ट्रेशन क्योंकि इनसॉल्युबल है, और फिर उसको हम वाटर एवेपोरेट करेंगे तो ए करेक्ट. सम प्रॉपर्टीज व्हिच इंडिकेट द डिफरेंस इन द एलिमेंट्स आर लिस्टेड. मेटालिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. व्हिच टू प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. देखो मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता है. नंबर ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं जब आप एक ही पीरियड में मूव कर रहे हो, शेल सेम रहते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं. क्यों? जैसे को सोडियम 11 है, उसके बिल्कुल सामने मैग्नीशियम 12 है, उसके बिल्कुल सामने एल्यूमिनियम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं ना. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 12, सो 3 and 4 D should be correct. X and Y react to form an ionic compound. Atom of X have more proton than atom of Y. Atoms of Y has more valence electron. जिसके more valence electrons हैं, इसका मतलब ये नॉन मेटल है. क्योंकि इसके ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट्स अ गुड नॉन मेटल, और ये मेटल है. तो X लूज करेगा और Y गेन करेगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं. Which statement is correct? Ions of X are negatively charged. No, they are positively charged. Atom of X has more electronic shells. उसने कह दिया कि atom of X has more protons than atom of Y. अगर उसने कह दिया कि atom of X have more protons, और वो देखो उसको हम assume ये करेंगे कि Y राइट साइड पे है और X लेफ्ट साइड पे ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब इफ दे आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, अगर तो वो सेम पीरियड में होते तो फिर तो ये नहीं कह सकता था कि X हैव मोर प्रोटॉन, क्योंकि सेम पीरियड में अगर लोग हैं तो राइट साइड वाले के पास ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं. अब उसने कह दिया X हैव मोर प्रोटॉन्स, इसका मतलब ये है कि X जो है उससे हाई पीरियड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे है लेकिन हाई पीरियड. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है और फ्लोरीन है, तो मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 12 है. मैग्नीशियम हैव मोर प्रोटॉन्स देन, इसको अगर हम X ज्यूम कर रहे हैं इसको Y ज्यूम कर लेते हैं.
बट वाई हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वाई के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. X has more electronic shells. Yes, magnesium have 3 electronic shells. Where does fluorine have only 2? B is correct. X and Y in the same period नहीं हो सकते ना, सेम पीरियड में हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेम पीरियड में अगर हैं तो X के पर प्रोटॉन ज्यादा नहीं हो सकते, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सेम ग्रुप में भी नहीं हो सकते क्योंकि ये एक मेटल और एक नॉन मेटल. The element in group 1 of the periodic table shows a trend both in reactivities and melting. Top to bottom reactivity increase होती है, melting point decrease होता है. So which statement about rubidium is correct? So group 1 देख लो. So this is group 1. Where is rubidium? ये rubidium, ठीक है. Which statement about rubidium? It has higher melting point than potassium. Rubidium have higher melting. Potassium किधर है? देखो top to bottom melting point decrease होता है. टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज है, तो रुबिडियम नीचे है, पोटेशियम ऊपर है, तो रुबिडियम डज नॉट हैव हाई मेल्टिंग. इट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक, यू नो ग्रुप 1 की मेटल अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती है. इट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस बनाती है. इट इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम. ये बात ठीक है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट रुबिडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम. करेक्ट? मेक सेंस एवरीवन? यस. दानियल भाई आ गए, आप सो के उठ के आ गए, अब तो क्लास खत्म होने वाली. Okay. Group 1 elements and transition elements are metals. ये बात ठीक है. Student X suggests that group 1 elements are above hydrogen in the metal reactivity series, but not all transition elements are. So hydrogen ये है, and all group 1 elements are above hydrogen. I think ये बात ठीक है, but not all the transition. ये बात भी ठीक है क्योंकि copper is below hydrogen in the reactivity series. So student X is correct. Yes. Student Y suggests that the densities of group 1 elements are lower than those of transition element. ये बात भी ठीक है. Group 1 की metals are soft. They have low densities. इतनी कम कि they float over water. So both students are correct. Tin is more reactive than lead but less than iron. Okay. So what is the reactivity series? यहां पे कार्बन और यहां पे जिंक है, तो tin is more reactive than lead. Okay. More than lead and less than iron. तो tin यहां पे है, SN होता है सिंबल इसका, ठीक है. tin is in between. Which method is most suitable? हम मुझे बताओ कि हमने देखना कार्बन इज आवर रेफरेंस, तो मेटल प्रेजेंट अबव कार्बन कैन ओनली बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस सबको कर सकते हैं, लेकिन सूटेबल ऊपर वालों के लिए, और नीचे वालों के लिए सूटेबल क्या है? द मेटल प्रेजेंट बिलो कार्बन. इनके लिए सूटेबल है हीटिंग विद कार्बन. ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने पूछा सूटेबल, क्योंकि हीटिंग विद कार्बन इज चीपर मेथड. अटैचिंग पीसेस ऑफ मैग्नीशियम अंडरगोन वाटर पाइप can protect from rusting. Which reaction protects the iron from corrosion? देखो मैग्नीशियम हमने लगाया है, is more reactive, so magnesium will corrode itself, saves the iron. So magnesium must corrode itself and saves the iron. So magnesium must lose electron in preference to iron. खुद corrode हो जाएगी और iron को save कर लेगी. Last from the class, today's test class. Which reaction takes place during extraction of aluminum from aluminum oxide? अभी लिख लेते हैं. ये +3 होता है, ये -2 होता है. It gains 3 electron to form aluminum, or it must lose electron to form oxygen and electron, 4 electrons. लेकिन आपको पता है the oxygen produced can further react with graphite anode to form carbon dioxide. तो ये एनोड के रिएक्शन और वो कैथोड का है. ये भी होता है, ये भी होता है. ये तो aluminum 2+ तो नहीं हो सकता ना. So 1 and 2 only. Make sense, everyone? I'll confirm the time, inshallah. We have class later today with another 50 MCQs of this, the same extended worksheet. We did these important questions from almost for 5 to 6 chapters of our syllabus. And then inshallah, in another detailed session, we will be exploring more important questions from the shifting of equilibrium, redox reactions, periodic table, metals के बहुत important आने वाले हैं. And there will be a lot of questions from air and water, and of course organic.
and experimental chemistry. So do not forget to attend another session, inshallah, later today. See you, and I'll send the worksheet before the class. Take care, everyone. Allah Hafiz.